Good morning everyone. Chapter 2 exercise 2b which is going on. Let's start. Look at your question number 3. Yesterday we have done second question. Now third question is factorize a part x square minus 15x plus 50. Now in this question you have to given a minus. In previous question all values in positive. सो आपको इसका ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. फैक्टर्स का प्रोसीजर वही है कि आपको वही सेम टू वैल्यूज लेनी है, लेकिन अब साइंस को ध्यान में रखना है. सी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 ये आपकी स्टेटमेंट है. डू द मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर. 1x स्क्वायर को मैंने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 50x स्क्वायर. और मुझे चाहिए था माइनस के 15x. मल्टीप्लाई करके चाहिए 50x स्क्वायर और माइनस के चाहिए 15. सो ऐसे दो कौन से नंबर लूं सेम कि ये मल्टीपल करके 50 बन जाए और माइनस के 15 10 एंड 5, क्योंकि अगर मैं 10 इंटू 5 करूंगी ये बन जाएंगे 50, और अगर मैं करूंगी 10 प्लस 5 तो ये बन जाएगा 15. लेकिन मुझे चाहिए था माइनस 15. सो फॉर दिस आई विल टेक माइनस 10 एंड माइनस 5. इस बात का ध्यान रखना क्योंकि माइनस माइनस प्लस अब ये बन जाएंगे माइनस 15 और मुझे यही चाहिए था माइनस 15. और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट. सो 10 इंटू 5 इज 50. सो हेयर इज योर फैक्टर्स आर minus 10x and minus 5x and plus 50 you will be write down as it is. Now combine first two terms and combine last two terms. So take a x as a common factor. So x I have taken, inside x minus 10 will be left. From these two values I have taken 5. So 5 as a common factor inside x minus 10. Now it's your verification, your bracket value should be same. Now afterwards in next line you will be write down the common part which is bracket, and in second bracket you will be write down the left of the numbers means x minus 5. So this is your answer. Now look at your D part. Here is p square minus 5p plus 9 by 4. Now this statement is given to you in fraction form. So your first step is take a LCM. If nothing is given to you, just take it 1. Then 4 is your LCM. By this I get 4p square minus 20p plus 9. Now in next step 1 by 4 I have taken common. So left of the numbers write down 4p square minus 20p plus 9. Now from here you will start to make the factors. So do the multiply first and last number. So 4 into 9 is I get 36. So by multiply I needed 36 and minus 20. So which two numbers I can take same common? Minus 18 minus 2, because minus minus plus it's minus 20. Minus 18 into minus 2, minus minus will be cancel out in multiplication. So it's 36. तो वो ये दोनों सेम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. दैट्स वाई आई हैव टेकन माइनस 18p एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द वेरिएबल 18p minus 2p. नाउ कंबाइन फर्स्ट टू टर्म्स एंड कंबाइन लास्ट टू टर्म्स. नाउ फ्रॉम हेयर 2p I have taken as a common part. So inside 2p minus 9. Then from here nothing is common. That's why I have taken 1. Because HCF is 1 if nothing is common. So inside 2p minus 9. Here is plus 9 we need and minus is already outside. So minus will become. Now you can check your verification is bracket value should be same. So write down same value and in next step in next bracket left of the numbers. Then 1 by 4. So I can write 1 by 2 into 1 by 2, it's become a 1 by 4. So for this 1 by 2 you will be solve it with 2p minus 9 and 1 by 2 this one you will solve it with this one. So 1 by 4 के जस्ट आपको फैक्टर्स बनाने थे. एक 1 by 2 इसके साथ किया सॉल्व और एक 1 by 2 इसके साथ.
Now you can solve the calculation. 1 by 2 into 2p is 2 will be cancelled. Then I get p. Then do the multiply this one. I get minus 9 by 2. Same like this one. First to first, then first to second. Clear? So this is your answer. Now look at your C part. Here is a square minus 13a plus 42. So by multiplication I need a 42 and by subtraction I need a minus 13. So which two numbers I can take? 6 and 7. And I have already told you, if you don't know then you can find out by LCM. So just take a LCM of multiple numbers. Clear? Yesterday we have already discussed. So combine first two terms and combine last two terms. So please try yourself. Next, D part, x square minus 7xy plus 12y square. Now here is difference बेटा, आपको कांस्टेंट टर्म नहीं है, 12y स्क्वायर है और जो फर्स्ट टर्म है वो x स्क्वायर है. फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दो वेरिएबल्स आए हैं आपके. तो आपको इस दोनों को हिसाब में रख के वेरिएबल सोचने. तो यहाँ पे minus 3xy I have taken and minus 4x. You can write down minus 4x minus 3y. It's your choice. Clear? xy and xy. xy वेरिएबल साथ में आएंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 12 x 2 है और y भी क्या है 2 है. So it is x square y square. So combine first two terms and combine last two terms. Same like E part. First of all you have to rearrange the values. इसको सही करके लिख लो, then make the factors. This one is also your homework. And F part, same like this one. Your first step is write down in proper form x square minus 20x plus 5 51. By multiplication I need a 51 and in subtraction I need a 20. So minus 17 and 3 is a value. So combine first two terms and combine last two terms. So please try yourself. This is your homework. Thanks and have a nice day.